हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, सेम पैटर्न इसमें आना है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप, जिसमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 18 मार्क्स का एक होगा और उसमें से एक का आपने आंसर देना होगा। इसी तरह से सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, इसी में से आपका पेपर आना होता है। क्वेश्चंस मोल्ड करके पेपर में डाले जा सकते हैं। इसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आंसर कौन सा लिखना है। और इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से अपने पेपर की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफाइन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड देन डिफाइन मल्टीप्लायर एंड देन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन लेसिस-फेयर पॉलिसी and next saving function in classical theory of employment and then fiat money and near money, define quantity theory of money and then inflationary gap and then monetary policy and next different phases of trade cycles and next define supply price and then distribution between induced investment and autonomous investment and then what is meant by bank rate and next define banking and then what is the financing and next define liquidity trap and then give the meaning of liquidity trap and next what are the secondary functions of a bank and next what is meant by value of money and then what is the recession and next is define fiscal policy and then what do you mean by stagflation and next is give the assumptions of classical model and then define gross investment and then define prospective yield and next define semi-inflation and next is write any 2 measures to control inflation and then define money and next is discuss the 2 determinants of effective demand and next is what is velocity of money and then what are the functions of a bank and next write the propositions of Keynesian psychological law of consumption and then features of MPC, marginal propensity to consume and then what is consumption function and next is define induced investment and next what are the main features of multiplier and then mention main features of money and next is what is Fisher's equation of quantity theory of money and then distinguish between microeconomics and macroeconomics and then what is full employment and next give the meaning of full employment as per the classical economists and then write the causes of fall in MPC, marginal propensity of consume with the increase in income and next mention main instruments of monetary policy and next is bank rate and then give primary functions of money and then what are the functions of a bank and next what is the relation between MPG and MPS and next is define gross investment and then define Say's law of market and next is what are the components of aggregate demand in Keynesian theory of income and employment and next is what is the other name of Cambridge equation of quantity theory of money and then define credit multiplier and next is write any 2 measures to control inflation and next is give 2 objectives of physical policy and next is what are the 4 phases of ट्रेड साइकिल्स। फेसिस की स्पेलिंग से यहाँ गलत है, PHASES आना था एंड देन डिफाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म कमर्शियल बैंक एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिजर्व रेशियो एंड नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल and next relation between multiplier and MPC and next Say's law of markets and then effective demand and next is commodity money and then primary functions of money and next commercial bank and then inflation। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट, जिसमें है एक्सप्लेन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स
and then define macroeconomics, what is the importance of and limitations of macroeconomics। स्टूडेंट्स इसके अलावा इसको आप पंजाबी मीडियम में भी देख सकते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इंग्लिश और पंजाबी मीडियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे और सोशियोलॉजी के आपको पूरे सिलेबस के लेक्चर्स, पंजाबी कंपलसरी के लेक्चर्स बहुत इजी वर्डिंग में यहाँ करवाए गए हैं। प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना और कोई कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC, explain short term and long term factors affecting it, and then explain and define autonomous investment and induced investment and discuss the factors affecting investment decisions, and then define multiplier, discuss its forward and reverse operations, also give the leakages in its operation, and then define multiplier, discuss its forward and backward operation, what are its leakages, and then discuss Keynes' psychological law of consumption, what are its implications, and then what is meant by MEC, marginal efficiency of capital, discuss the factors that influence it, and then what is meant by marginal efficiency of capital, explain the short run and long run factors on which MEC depends, and then what is consumption function, explain the determinants of consumption function, and then distinguish between marginal propensity to consume and average propensity to consume, and discuss the factors which determine the propensity to consume, and then what is meant by investment, explain its types। स्टूडेंट्स ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट के। अब सेकंड यूनिट जिसमें है फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्रिटिकली डिस्कस, and then critically explain Keynesian theory of income and employment, and then explain and criticize Say's law of market, and then critically examine the classical theory of employment, and then critically examine the preference theory of rate of interest, how credit is the created by banks give limitations of credit creation, and then supply creates its own demand, explain the statement giving its implications, and then define effective demand, what are its determinants। ये यूनिट सेकंड के क्वेश्चन थे। अब है थर्ड यूनिट जिसमें है क्रिटिकली एक्सप्लेन कैनेशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन क्रिटिकली एग्जामिन कैनेशियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चंस मोल्ड करके डाले गए हैं। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको मोल्ड करके वहाँ पेपर में आ सकता है। एंड देन क्रिटिकली एग्जामिन फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, and then discuss the process of credit creation by commercial banks, and then how credit is created by banks, give limitations of credit creation, and then what are the main functions of bank, how can the bank be helpful in economic development, and then explain the and criticize the law of market, explain ancient theory of income and employment, and then interest is reward for parting and liquidity, critically examine the statement, and then critically explain liquidity preference theory of interest। अब यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी होती है, लास्ट में कंक्लूड करना भी ज़रूरी है, और इसके अलावा जो पूछा जाता है उसको आपने देना। जैसे डिफ़ाइन इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के बारे में डिफ़ाइन करना है इंट्रोडक्शन देने के बाद, फिर इसकी डेफिनेशन 3 के करीब आपने डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद आपको वर्डिंग में इसका बताना है कि क्या है, और उसके बाद इसके कॉजेज़ लिखने हैं। तो कॉजेज़ जो इसके हेडिंग्स सब हेडिंग्स बना के आप इसके दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बना के, उसके बाद उसकी डिटेल लिखते जाना है और एंड में कंक्लूड ज़रूर करना है। एंड नेक्स्ट है डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, सजेस्ट मेजर्स टू करेक्ट इट, एंड देन हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल स्टेबलाइजेशन। एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रेड साइकिल, मेंशन वेरियस फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स, and then explain causes of inflation, also explain measures to control inflation, and then discuss the role of fiscal policy as a stabilization policy, and then what is the fiscal policy, discuss the role of fiscal policy as a stabilization policy, and then what is monetary policy, discuss the role of monetary policy as a stabilization policy, and then what is demand pull and cost push inflation, suggest measures to control inflation, and then discuss demand and cost push types inflation, also explain the physical measures to control inflation, explain demand pull and cost push theory of inflation।
and then how does monetary policy help in achieving the objective of internal stabilization. स्टूडेंट्स ये थे लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, बाकी सारी क्लासेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। इनको हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम में बनाया जा रहा है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।